time क्योंकि हमारे पास कम है, so I will try that this talk of ours becomes meaningful and it helps you in your professional life. So I have designed it in a manner a practical aspects should be brought to your notice. I have prepared a small outline. जिसकी copies of that outline will be provided to all of you. These are salient points only. The discussion will be oral, so those points you can keep with you whenever you are applying this session. थोड़ी सी background दे अगर तो before the 20th century, the philosophy of state was called Laisez Fare state. Now, आपको दिक्कत लगेगी तो आपको ये मिल जाएंगे तो सामने स्पेलिंग लिखते हो Laisez Fare state. अगर ये आपको भूल जाए तो you can call it a police state. अगर ये लफ्ज़ याद ना रहे चैलेंज तो you can call it a police state. उस वक्त this philosophy was based on individualism and contractual freedom. आज आपके मुल्क में जो सिस्टम है उसमें contractual freedom नहीं है. Whenever you enter into a contract with any government agency or government body, there are certain regulatory laws and certain regulatory mechanisms. So you can't exploit any person to enter into a contract at your terms. There are certain minimum requirements and benchmarks which you have to follow. उस वक्त concept of individualism was dominant. And contractual, it means it was an era of contractual freedom. Any employer could employ any person on any wage, on any conditions, even if they were adverse to his rights, they were adverse to his own well-being and others. So, in that sense, naturally, इसके 4 functions थे. Laissez Fare state के. Only 4 functions. पहला जो इसका function था, वो था defense of the country. जो almost all states have this universal function आज भी है. और उसके बाद था कि to maintain law and order in the country. ये भी आज भी है. Third function था कि आप इसको administration of justice. और चौथा फंक्शन था some taxation जिसका आपका ताल्लुक है to raise money to perform other 3 services. Which इसका मतलब ये है कि there were hardly any regulatory intervention of the state in private life. Result was that क्योंकि हमारे से हम इसको ये टॉपिक अच्छा नहीं है तो I'll just skip over many details. It was then it gave rise to, because of contractual freedom, it gave rise to a lot of exploitations. It eventuated in the concentration of wealth, slums, mass exploitation, etc. And because of the disparity in the distribution of wealth, there were large number of people who could not meet both ends meet even, and there were a few rich people who owned the resources, and they immediately exploited the majority. That was a very miserable and woeful condition rather. अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको 19th century में पता चलेगा कि how difficult the life of the individuals was. क्योंकि जो human rights का concept है ये भी 20th century की ही product है. उससे पहले it was a dead issue. Then scholars जो होते हैं, political scientists, scholars, activists, they started writing, considering in their books, in their works, in their talks, no, society, state cannot be an idle spectator and leave the masses at the mercy of a few owners of resources. जो आपके मुल्क में आजकल तकरीबन है, सीधी बात. तो
Then they started pleading for proactive role of the state. The state, therefore, slowly started intervening in the private entrepreneurship through regulatory mechanics. Some regulatory framework was made and started. For example, some rights were conferred on the labor, minimum benchmark. Slowly they started introducing the regulatory mechanism. अब ये जो regulatory mechanism जब शुरू हुआ, then still state could not find this mechanism sufficient to ameliorate the condition of the poor people and the miserable people of the majority. They thought that there was a class of people who needed support from the state. They could not stand on their own through regulatory mechanics. They needed sustenance, minimum support. They therefore started undertaking some pro-poor initiatives. Some pro-poor initiatives in the various forms. Pro-poor initiative उन्होंने इसमें अपना लेने शुरू कर. Or cut it short, slowly within a period of 10 to 20 years, a model developed which changed the philosophy of life. And that model was called, या तो उसको welfare state हम कहते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है, तो इसी को service delivery state कहते हैं. यानी state decided to hold hand of those who were destitute, who were in need, that state must help them in a proactive manner. Today, globally, you have this concept of state. आपके मुल्क का जो आइन है, it is based on the concept of welfare state. जो आपका आइन है, जिसका preamble है, it talks about salient features of a welfare state. In Pakistan, we have added another concept, that is welfare state according to Sharia, which is not very different. जो essentials हैं, they are the same, identical. जैसे fair play होगा, justice होगा, reasonability होगी, democracy होगी, they are compatible with Sharia. इसमें कोई नहीं. सिर्फ ये है कि in Pakistan no law shall be made and no action shall be taken which is violative of Sharia. तो ये हमने उसके साथ amalgamate किया है, because our state was established on ideological basis कि हम इस्लाम के सिस्टम को इधर नाफिज करें. तो अगर आप देखना चाहें कि वेलफेयर स्टेट होती क्या है, तो यहाँ तो शायद टाइम ना मिले मुझे, तो आप आर्टिकल प्रेम्बल पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दे आर द सेम थिंग. They are the same thing. Preamble is objective resolution, which is contained in Article 2A of the Constitution. वो duplicate है preamble का. और it is objective resolution वो है जो पाकिस्तान बनने के लिए adapt किया गया था कि किस तरह का हमारा आइन होगा. तो जो हमारे founding fathers हैं, they adapted a sort of system based on welfare of the masses. And then there are a number of provisions in your constitution which create Pakistan, and we say Pakistan as a welfare state. It's another matter that in reality, how far we have achieved the goal is another issue to discuss. We can't say that we are truly a welfare state yet. And I can't say that we have even began towards that direction. Constitutional provisions are there, but the implementation of those provisions is yet to be initiated. अभी वो उस तरह initiate नहीं हुई. जब आप preamble पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप खुद ही आपका दिमाग है ये हमने achieve कर लिया या नहीं किया. Then in your constitution there are principles of policy. The principles of policy, and they also enshrine essential features of welfare state.
जैसे आप minority rights को protect करेंगे, you will, and so many other things in the principles policy. There are those principles which state must observe while making legislative policies, administrative policies, or judicial policies. They are the beacon lights, guidelines, and they have to be observed by everybody. Then another requirement of welfare state aid, guaranteeing of the minimum human rights. In your constitution, these minimum human rights are called fundamental rights. And the constitution has declared that any law or executive action, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, which is violative of the fundamental rights of the citizens, directly or indirectly, is void. Constitution declared it as void, Article 8. So, this और के बाद there are other many provisions जो envisage करती हैं कि पाकिस्तान will be an Islamic welfare state. Islamic welfare state और Western welfare state में कोई बहुत difference नहीं है, marginal difference. Essential components are the same. सिर्फ ये है कि हम within parameter of Sharia रहेंगे. We can't travel above it. West में ये parameter नहीं. जैसे for example, in the West, they have legally allowed gay and lesbian relationship. They have allowed it. लेकिन Pakistan में it will never happen. It can never be done by the legislature. Reason being that will be un-Islamic. Shariat के खिलाफ होगा. So we have to live within the parameters of Sharia. ये फर्क है, बाकी सब चीजें उसी तरह की आपको इसके अंदर मिलेगी. तो दुनिया में वेलफेयर स्टेट आ गई. This is also known as service delivery state, which means two things. Public servants are not masters. आपको ये समझ लेना चाहिए कि public servants are not master. You are the servants of the people and get pay from the people. जैसे आप घर में नौकर रख लेते हैं तो आपको हुकूमत नौकर रखती है at the cost of public money. So public servant का मतलब ये है to serve the people from top to bottom. तो तमाम सरकारी मुलाजिमीन को they must understand कि बेसिकली जो पावर्स हमें मिली हैं, आप सबको समझना चाहिए, the powers you enjoy are not your personal powers. They are not your powers. They are your responsibilities. जिसको आप पावर समझते हैं. पावर तो कोई नहीं है. You are bound by law. You can't do anything contrary to law. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ये जो पावर्स हैं आपको दी गई हैं, that is to serve the people and to achieve the goal of the public welfare state. इसलिए इनको, if you want to sit in the public office, don't be arrogant and don't be proud under the toxic effect that you are very powerful. An SHO, if he follows the law, is a powerless man. When that SHO violates the law, he can arrest anybody against law. Then he becomes powerful, when he exploits that power. Same is true of all public servants, wherever they be. If you follow the law, you are slave of the law. And if you don't follow the law, you are master of the law. फिर आपको मर्जी करें. And unfortunately, in this country, most of the people don't respect law. Even सरकारी मुलाजिम जो हैं, हम लोग law को respect नहीं करते. We try to overstep the law for one reason or the other. Exceptions might be there, but there is this ailment is present in our public service. तो हमारे यहाँ जो है, इसलिए ये जो आपको समझना चाहिए कि आपको जो इख्तियारात दिए गए हैं, that is to serve the people within the parameters of law, you are likely to enforce. अब आप टैक्स के लोग हैं, तो आपने जो टैक्स के लॉज हैं उनके पैरामीटर्स में लोगों को सर्व करना है.
इसी तरह हर एरिया का अलग अलग लॉ है, आपने उस लॉ के पैरामीटर के अंदर अंदर यू हैव टू कन्फाइन योरसेल्फ एंड यू हैव टू सर्व द पीपल। अब वेलफेयर स्टेट का जो प्रॉब्लम आया वो ये हुआ कि स्टेट फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैव मल्टीप्लाइड। क्यों? एंड नंबर ऑफ फंक्शनलिज्म, आप देखें, इमेजिन, is there anything, can you do anything in law without intervention of state? बताइए, आप शादी करनी है तो पर्सनल अफेयर, but state still regulates it। आपने मैरिज को रजिस्टर कराना है, डाइवोर्स करनी है तो आपने मतलब है तो पर्सनल मैटर है डाइवोर्स करना, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी, तो हर चीज में रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेशन इन्वॉल्व। When state regulates all activities and most of the activities of the state, the number of the functions have increased. और जब number of function increase हुए तो number of public servants also increased। अब इसलिए आज के दौर में public servant बहुत ज्यादा है, because the functions they have to perform, they are numerous। बेसिकली आपके लिए 4 किस्म के फंक्शन आजकल परफॉर्म करते हैं, आप भी यही चारों फंक्शन परफॉर्म करते हैं टैक्स वाले लोग। पहला फंक्शन है, आप देखें वहां लिखा हुआ है सॉवरेन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। The country or in your constitution is based on dichotomy and trichotomy of power। स्टेट के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, legislation, executive functions and judicial functions। ये सारे के सारे जो फंक्शन स्टेट के होते हैं, they have to be performed by separate organs। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो theory of separation of power आपको याद होगी, अलग अलग होना चाहिए। जुडिशरी के बाद जुडिशियल फंक्शंस है, so that none of लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि power corrupts a man and absolute power corrupts you absolutely। इसलिए ये सेपरेशन की जाती है ताकि no person should be repository of all powers। तो एक होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दिए हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। अगर मुझे को कहे कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन लिस्ट दे दे तो I will consume some 20 minutes to describe them and still not finish it। इसको हम माइनस फार्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव, ये बोतल है, in this bottle there are 3 functions। इमेजिन कर लें, कुछ हिस्सा इसमें लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, लेजिस्लेशन का, कुछ जो है जुडिशियल फंक्शंस है, बाकी और कुछ एग्जीक्यूटिव है। इसमें से टेक आउट जुडिशियल फंक्शन विच इज डिफाइनेबल कमोडिटी। जुडिशियल फंक्शन डेफिनेट कमोडिटी निकाल सकते हैं, इसमें से आपने जुडिशियल फंक्शन निकाल दिए। देन टेक आउट लेजिस्लेटिव फंक्शन, वो भी आप निकाल सकते हैं इसमें से आसानी से, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स हैं। व्हाट इज लेफ्ट रेजिड्यूरी, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है। इसलिए executive functions are numerous these days, and executive therefore has become very very powerful because of the functions they have to perform, because of the powers they have to perform, they have become very powerful। आजकल जो executive functions हैं 4 हैं। One is their sovereign executive function, जो as executive organ of the state they have to perform some functions are given in the constitution। executive के अदर फंक्शंस जैसे टैक्सेशन लेवी करना और एनफोर्स करना और रिकवर करना एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और हर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लॉज भी देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। बट स्टेट टुडे आल्सो परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ये जो एग्जीक्यूटिव है ये these days परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शंस। इट आल्सो परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेशन of justice by the public servants। आप भी एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस करते हैं, लोगों के डिस्प्यूट सेटल करते हैं विद द डिपार्टमेंट और अमंग देमसेल्व्स। तो जो दूसरा फंक्शन है इट इज क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्वाजी का लफ्ज जब किसी भी लफ्ज के साथ लग जाए, लीगल टर्म, इट मीन रिजेंबलिंग बट नॉट एग्जैक्ट।
resembling but not. यानी legislative function वो है which legislature performs. Legislative function वो है जो which legislature performs. और quasi-legislative function वो है जो legislature अपना function delegate कर देती है to the executive और to the judiciary. हाईकोर्ट को भी होती है, वो रूल बनाते हैं. आपको भी होती है, आपके इनकम टैक्स के तहत एफबीआर ने बेतहाशा रूल्स बनाए हुए हैं, वो सारी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो जब आप क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो यू डू नॉट परफॉर्म योर सॉवरेन फंक्शन, यू परफॉर्म डेलीगेटेड फंक्शन, बिकॉज इसने legislature in your law has delegated some of the law making function to the executive. In your case FBR. अब वो मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करते हैं, कहीं रूल्स बना लेते हैं, कहीं रेगुलेशन बना लेते हैं, कहीं वो SROs बना इशू कर देते हैं, वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर के तहत ही मोस्ट ऑफ द SROs are issued in the statute. So delegated, तो quasi legislative function वो है functions performed by the executive, legislative functions performed by the executive by using power delegated to them by the legislature. इनकी ओरिजिनल पावर नहीं है, but you are performing these functions. आपके डिपार्टमेंट में कितने सारे रूल्स आपने, जब आप सीनियर पोजीशन पे जाएंगे तो आप खुद भी बनाने शुरू करेंगे रूल्स. अभी आप प्रपोज करते होंगे, ये आपका फंक्शन है हर डिपार्टमेंट. थर्ड फंक्शन इज quasi-judicial. Quasi-judicial का मतलब है administration of justice has been delegated to executive. And quasi-judicial means justice administered by public servants. Determine the rights of the people. Rights of the people vis-a-vis your own department and also amongst various citizens. अब बहुत से dispute आपको settle करने पड़ते हैं. तो you are performing quasi-judicial function. ये तीन तो हो गए. चौथा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज डिस्क्रेशनरी फंक्शन. ये एक्चुअली आज हमारा टॉपिक है. तो देखिए, वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव आर अनडिटरमिन्ड, अनस्पेसिफाइड. द फर्दर यू गो, द फर्दर यू हैव टू गो. कोई ये हम टारगेट नहीं फिक्स कर सकते कि इस टारगेट पे आगे वेलफेयर हो जाएगी, बिकॉज your vision and your standard will keep on rising with the rise of your own welfare. कभी यहाँ पहुंच के थोड़ा आप आगे थे, तो आपका जैसे सड़क होती है ना, जितना आप उसको दूर से देखें तो पतली नजर आती है, जो नजदीक जाएंगे तो वो चौड़ी हो जाती है, फिर पतली हो जाती है. तो इसी तरह आपके ये सारी चीजें हैं इसमें. तो इस मॉडर्न एज में डिस्क्रेशन हैज इंक्रीज्ड. अब अपने लॉज देखेंगे, 90% योर पावर्स आर डिस्क्रेशन. 90%. वो वजह ये है कि यू हैव टू अचीव वेलफेयर ऑफ द पीपल, यू हैव टू रेंडर सर्विस डिलीवरी, एंड इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड अफेयर. और उसके लिए यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स फ्रॉम केस टू केस, from situation to situation. कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं हम डिवाइस कर सकते आपकी पावर को कंटेन करने. मॉडर्न एज में द डिबेट इज कि डिस्क्रिशन इज अब्यूज्ड. बहुत सारी डिस्क्रिशन अब्यूज होती है. और एक आर्गुमेंट ये है कि हेल विद डिस्क्रेशन, ऑफिसर्स को डिस्क्रेशन मत दे, बिकॉज दे अब्यूज इट. और इसमें कोई शक नहीं है कि वी अब्यूज डिस्क्रेशन. और ये डिबेट है बहुत स्ट्रॉन्ग दुनिया. लेकिन दूसरी तरफ डिबेट ये है कि दोनों तरफ दोनों इवन है. इफ यू गिव डिस्क्रेशन इट इज अब्यूज. इफ यू डोंट गिव डिस्क्रेशन, लॉ विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रूएल्टी, पनिशमेंट, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लॉ की एप्लीकेशन. तो दोनों तरफ नुकसान है. तो जो लेसर इवल है वो दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है कि डिस्क्रेशन हैज टू बी गिवन. Discretion has to be given in this modern welfare state where public servants have to deal with a lot of complex issues, lot of complex problems, and they have to make suitable decisions from case to case basis.
ऑफ कोर्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, लॉ के ऊपर तो कोई जा नहीं सकता ना। तो इसलिए मॉडर्न एज में डिस्क्रेशनरी फंक्शंस का वॉल्यूम इज वेरी वेरी हाई और उसका अब्यूज भी बड़ा नटोरियस है, उसका अब्यूज भी बड़ा नटोरियस है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप अगर लास्ट पे देखेंगे तो मैंने फंक्शंस की दो किस्में बताई हैं। एक कुछ फंक्शन आपके ऐसे हैं विच आर मिनिस्ट्रियल फंक्शंस, ज्यादा फंक्शंस आपके ऐसे होंगे विचार अगर अपना इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स देखें, सेल्स टैक्स देखें, दूसरे टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट देखें, तो देयर आर सर्टेन मिनिस्ट्रियल फंक्शंस बट मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हैव बीन कन्फर्ड ऑन यू एज डिस्क्रेशनरी फंक्शंस। अब डिफरेंस ये है कि मिनिस्ट्रियल फंक्शन इज दैट where the command of the law is fixed and you have simply to enforce it regardless of the circumstances, regardless of the hardship. मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि कोर्ट इश्यूज a warrant or a summon, a warrant to some public servant for enforcement. Public servant की डिस्क्रेशन नहीं है करे ना करे, it's a ministerial function, a dictation by the court which has to be enforced and obeyed. मोटरवे पे आप जा रहे हैं, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा हुई है या 50 ज्यादा है, फिक्स फाइन है आपको 900 रुपए, क्योंकि लॉ ने उसको फिक्स कर दिया हुआ है। ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं विच आर मिनिस्ट्रियल फंक्शन, और मिनिस्ट्रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि you have just to execute the command of the law as such and you have no option to make adjustment. जो discretionary function होता है उसमें you have the option, choice. But here let us distinguish between personal discretion and legal discretion, public discretion. Personal discretion में freedom ज्यादा होती है, आपके जेब में पैसे हैं, आपकी अपनी कमाई है, आपकी अपनी डिस्क्रेशन है, उसमें सिर्फ आपकी विजडम काम आएगी, मैंने पैसा जाया तो नहीं कर रहा, और अगर विजडम ने खुदा हाफिज कह दिया तो कर दे जाया। वहां भी आपने डिस्क्रेशन यूज करनी है कि मेरी तनख्वाह ये 50,000 है तो मैं 40,000 का खाना क्यों खाऊं जाके बड़े होटल में, मेरे फैमिली कहां जाएगी बाकी 10,000। वहां भी आप विजडम यूज करते हैं, डिस्क्रेशन बैलेंस करते हैं, लेकिन वहां फ्रीडम ज्यादा है। जो पब्लिक डिस्क्रेशन है दैट इज ए स्ट्रेट जैकेटेड डिस्क्रेशन, फ्रीडम है बट फ्रीडम विद इन लीगल ऑप्शंस। लॉ आपको एक से ज्यादा ऑप्शन देता है, लॉ गिव्स यू मोर देन वन चॉइसेस, मोर देन वन ऑप्शन। लॉज प्रेस्क्राइब सर्टेन कंसिडरेशन, सर्टेन कंडीशंस and then allows you appropriate decision in different cases. This is our discretionary function. लेकिन ये जो choices हैं ये भी legal है, law ही देगा आपको, you can't rise above the law। देखें आपका country rule of the law पे चल रहा है, at least if not practically, at least theoretically। और Article 4 of the Constitution guarantee करता है कि nobody is above law, public servants are also slave of law। तो पब्लिक सर्वेंट ने तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपने अपनी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस यूज करना है डिस्क्रेशनरी फंक्शंस में, दैट हैज टू बी विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ। यू कांट वायलेट द लॉ इन द नेम ऑफ डिस्क्रेशन। तो ये तो दो फंक्शन है। आज हमारा टॉपिक जो है वो डिस्क्रेशनरी फंक्शंस का है। अब मैंने आपको बताया कि डिस्क्रेशन जो है नॉर्मली अब्यूज होती है एंड देयरफॉर कोर्ट्स हैव डेवलप्ड ग्लोबली, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबल कोर्ट्स ने यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स डेवलप। दीज प्रिंसिपल्स guide the public servant how to exercise discretion and also provide grounds of judicial action if you misuse your discretion। तो आज हमने इन प्रिंसिपल्स को भी देखना है कि जो मोटे मोटे प्रिंसिपल्स कौन से इवॉल्व हुए हैं which will help you। आगे चलिएगा। अब
लॉ के अंदर आपको कोई याद आएगा बहुत से लफ्ज यूज होते हैं डिस्क्रेशन देने के लिए। नॉर्मली अक्सर औकात पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज यूज होता है, अक्सर औकात लफ्ज लिखा होता है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट डिटरमाइन किसने करना है? आपने। whether the action you propose you are taking now is in public interest or your personal interest। तो पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज यूज होता है। ये मैं ड्राफ्टिंग की बातें कर रहा हूँ कि लॉज में ये लफ्ज यूज होते हैं आप ये डिटरमिन करने के लिए। बहुत ऊपर लिखा होता है पब्लिक पर्पस। अब आपकी डिस्क्रेशन है किसी पर्पस को आप पब्लिक पर्पस डिक्लेयर करते हैं कि नहीं करते, बट इट इज नॉट योर पर्सनल स्वीट विल। पब्लिक पर्पस हैव टू बी डिटरमिन इन द लाइन ऑफ लॉ जो आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर रहकर आपने पब्लिक पर्पस डिफाइन करना है। फिर सेटिस्फेक्शन का लफ्ज अक्सर यूज होता है, if the officer is satisfied, if the authority is satisfied। Satisfaction again is subjective satisfaction, but controlled by the legal provisions। लॉ के दो हिस्से होते हैं, one is the letter of the law, एक होता है लेटर ऑफ द लॉ, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ। जब हम कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ तो हमें दोनों पर्पस अचीव करते हैं। वी हैव टू फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ एंड वी हैव टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। इफ यू डिफीट द ऑब्जेक्टिव इट विल बी लीगल एक्शन। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। अक्सर औकात आपके महकमों में, सरकारी महकमों में, मैं भी सरकारी महकमे में रहा हूं, अपॉइंटमेंट्स होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन की हुई है और कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट किया है और सिर्फ लॉज में कि अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन मेरिट। और मेरिट का मतलब ये है कि आप अपॉइंटमेंट्स को मतलब है वहां गरीब अमीर का कोई डिस्टिंक्शन नहीं आप करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सब। You can't give appointment to all, but you can give an equal opportunity to all। अपॉर्चुनिटी तो आप दे सकते हैं ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिसर इंचार्ज हूं, मैं वो सारा प्रोसीजर फॉलो करता हूं लॉ का कि मैंने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, हमारे मुआशरे में अक्सर होता है। मैंने दूर से लोगों से एप्लीकेशन भी मंगा ली, उन लोगों से भी जो बेचारे गरीब हैं, उन्होंने भी पैसे उधार मांग के आपको एप्लीकेशन भेजी, राइट। फिर मैंने उनको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जानवरों की तरह, यानी अगर 200 लोग हैं मैंने कहा 8 बजे आ जाओ, वो बाहर धूप में खड़े। मैंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि मैं बैचेस में बुला लूं ताकि लोगों का टाइम बचे। मैंने आप देखें इसी तरह होता है, मैंने सबको इकट्ठा बुला लिया, मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं की। हालांकि ये इसमें कोई फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, एक आपका विजडम इन्वॉल्व है कि आप 5-5 लोगों को 1-1 घंटे के वक्फे से बुला लें। ये भी एक सहूलत हो सकती है, सर्विस डिलीवरी ये भी है। आपने बुला लिया, आपने इंटरव्यू कर लिया, लोगों को एक्सपेक्टेशन दे दी कि मैं नौकर हो जाऊंगा। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट की तो आपने फेवरेट की लिस्ट अपॉइंट कर दी, मेरिट पे नहीं की। तो यू फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ बट यू डिफीटेड द स्पिरिट ऑफ